हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग पर, जहां हम बेसिक से सी पढ़ेंगे। और आज फर्स्ट लेक्चर है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ सी। Starting with the core feature, so stores data. C helps in saving information in such a way कि हम उसे बाद में भी use कर सकते हैं. Operate on data like adding, subtracting or even creating our own results. Input and output. C helps in taking inputs and after execution वो हमें एक output देता है. Control program flow and execution. अब इसके बाद what is C? So C is a programming language created by a smart person named Dennis Ritchie back in 1972. तो इमेजिन करो, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए. ये एक सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज है एंड इट इज़ अ यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ यू पीपल आर थिंकिंग वाई वी लर्न सी. सो चलो देखते हैं. सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो सी एक बेस की तरह काम करता है इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए. इफ़ यू स्टार्ट विद सी यू कैन ईजीली लर्न अदर लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा और सी हैशटैग. ऑल्सो सी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम. इन डे टू डे लाइफ यू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. आप विंडोज़ यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करते हो. दीज आर ऑल बिल्ट इन यूजिंग सी. इवन आपका एंड्रॉयड फोन और अदर बिग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर क्रिएटेड यूजिंग द सी लैंग्वेज. एम्बेडेड सिस्टम. सो जो आप डिवाइसेस यूज़ करते हो डेली, माइक्रोवेव्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कैमराज हो गया, सो दीज डिवाइसेस रिलाई ऑन सी टू मेक श्योर कि दे रन क्विकली एंड स्मूथली. इट हेल्प्स टू सेव देयर मेमोरी एंड स्पीड अप देयर परफॉर्मेंस. Now tell me one thing, do you like to play video games? So game development, C play vital role in creating games. C is necessary for core components of game engines to make sure कि the game run fast and without any delays. Let's move further. C has gone through few changes over the time. The main ones are K and RC. तो ये पहला वर्जन था C का, which is created by Dennis Ritchie and Brian Kernighan. Now ANSI C. So ANSI stands for the American National Standard Institute. So the group of experts made its standard version and we called it C89. ISO C in 1995 and C99 in 2000. In these years, C was updated again to make it even better. Today we mostly use C99. So नाउ आज के लिए एंड इधर ही करते हैं एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड अदर. सो आज के लिए बाय बाय.